because if you guys need it, or even if I need myself, or few people who are not here, like if they need it, I can easily share it. So actually I've joined from two accounts today. So we'll download it Yeah, from no here. issue. Okay? So this is the first step. Mm. And just click it. So guys, like this session is going to be a bit boring, okay? So just stick with me and bear me for like next 20 minutes. It's going to be super boring. So let it download. And meanwhile, what we can do is, so this is for GitHub. So basically, this helps us to get a control over all the Git operations. So this has all the things that we need. Okay, once we do this, another important thing is Git LFS. LFS means large files. Okay, as we know, we will be working with images, maybe videos as well. Okay, and 3D objects, of course, it's there. So what happens is like Git, like by default, does not support all that. So for that, they have created something called as Git LFS, and we for sure need this. Okay, so we'll download it and we will install this one first. Okay, first install Git and then install GitHub. Okay, and maybe there's a better way of getting all these things together, but this is what I've been following, and this gives you the best result. Okay, so since that time, I keep on using this method to get things. So this is what I'm demoing to you guys as well. But if you know something better and all, of course, like in the future sessions, do share your knowledge with each and everyone in here. So yeah, just keep it like whatever the default is, that is the best thing. Okay, just keep it and click on next. And this is kind of important. Okay, do choose this, the middle one, else some things may not work. Mm. Mm. And this must be fast forward or merge. Okay, don't select any of these. Like even by mistake, if someone else is selected, just make sure that you are selecting the first one. Okay, so once we install Git, we should be ready for the next step. So once you do that, you should get the option for a Git bash, okay, in some folders. You'll get it in, so you right click and you go to show more options. You'll get it. Yeah. Yeah. So यहाँ पर जाते हैं and we'll go over here. ठीक है. So okay, so suppose like this is the thing like your repo, then you usually like what we do is we come to this particular folder and open Git bash here. Okay, so the thing is that basically terminal it opens the terminal in this particular folder. So there is no need for you to do all that cd commands. Okay, but yeah, like we will try our best to avoid that. So that is done. Next step would be to get the LFS.
Without LFS, it will say like the file size is too big and all that. So uh, you know uh, check this out. Like if you are interested, you can just check why we are using this and like what would happen if we don't and all that. Okay, so basically now the JIT should support all the large files. So basically the 3D objects, media files that we have, it should be supported by that by now. Okay, so this is basically what sets up the JIT for our system. Okay. So once we are set up with the system, what we should do is we should get a client, basically the GUI, to work on all this, basically whatever functionality JIT provides. So what I use is I use fork. I have used the native JIT this thing as well, application as well. That is also good, but I find fork to be very user friendly and all that. Okay, so that is the reason why I keep using fork, and this is totally free. Okay, they will never ask you to buy, or they will never spam you with anything. It's really great software. And it's pretty easy because it has some functionality, and the way the layouts and all are there, it's pretty neat. So I'm pretty sure like you guys will also love it. Do give it a try. Mhm. uh, okay, so let me install it first, and then we will go on like how to create a repo and all. mm, okay. mm, I will just stop sharing the screen for like a minute or two, and then so these things are for like this is kind of particular to you, so I'll not be sharing it. So let me complete this first. Mm, mm, okay. Sharing it again. Like, yes, I think you should know this. So in here, like, don't click on finish in a hurry. Okay. So what we'll do is we'll create a repo folder for ourselves. Okay. Here I will create a folder called repo. Okay. I'll be using this. Actually, this is a new laptop that I bought, and I have not set up anything in here. So I feel like I'm setting all these things with you guys itself. So like we'll have a pretty good understanding of how things work if you don't have it with you. So this is the folder I want to have all my repos in. So in this folder, I can create like multiple folders. Like basically, whenever we clone a repo, a new folder gets created. So I will do all that inside this particular folder. So you all guys like make sure that you have a dedicated folder where you are going to place all your repos. Okay. Okay. So let it take a bit of time to do all the things that it must. I should log into other thing. Um, I should log into GitHub now. Hmm, okay. If you know, great. Okay. So I'm just getting the new repo. Like this is just a demo repo, but we'll be creating one for mobile maybe
मे बी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट नेक्स्ट वीक, ठीक है। सो अभी तो यार इट विल बी डेमो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इज फॉर टेस्टिंग, ठीक है, एंड दिस विल बी पब्लिक, and here you get an option, like where you can select Unity. So ये क्या करता है, like GitHub knows, like for Unity what is needed and what is not. So accordingly it will create a git ignore file, but it's not enough. I will explain why. ठीक है? So just follow this, okay? Don't worry much. Follow this, and licensing would be none. ठीक है? Okay, that's it. So we'll create a repository. Okay, so we have a repository over here. Okay, like, so this is something that I will be creating, but you guys are supposed to go here and then file accounts. ठीक है, यहाँ पे आपको आपका एक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। So currently we are in GitHub, okay, so this is what we are going to select, ठीक है, and we are going to log in. क्या था यार मेरा बात? हम्म, okay, so once you get this right, you are safe, ठीक है। क्लोज करते हैं यहाँ पे, एंड विल ट्राई टू क्लोन, ठीक है। सो अभी क्लोन के लिए हम क्या करेंगे, विल गो हियर एंड वी शुड गो टू द रेपो, एंड सो SSH like in industry, this thing जब आप जाते हो ना, like you will be forced to create this SSH key, ठीक है। बट डोंट वरी अबाउट इट एज ऑफ नाउ, इट्स काइंड ऑफ सिंपल। आपको क्या करना है, लाइक आपके अकाउंट में यू विल गेट दिस ऑप्शन, सो व्हेन यू हैव अ एंटरप्राइज दिस थिंग, राइट, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लाइक बेबी सम सीनियर गाय विल गिव यू द लिंक। तो वहां पे क्लिक करना है, आपको एसएसएच की जनरेट करना है, वो की लेके आपको यू शुड ऐड दैट की इन हियर, ठीक है। यू विल गेट दैट ऑप्शन, लाइक वंस यू हैव दैट एंटरप्राइज थिंग, राइट, यू विल हैव दैट दिस थिंग, एसएसएच की होता है ना, वो आपको मिल जाता है। एज ऑफ नाउ आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हम जिट यूज कर रहे हैं दैट्स नॉट एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है। बट व्हेन यू गो टू अ कंपनी, you will be taking that. So for now we will go to https and copy this, ठीक है। So this is basically the repo। हम क्या करेंगे, अभी क्लोन करें, ठीक है। ठीक है, so it has already taken it up, okay, डेमो हमने ले लिया है, and this is the parent folder repo, ठीक है। So when you click on clone, so it is going to create a repo, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो अभी हमें क्या मिला यहाँ पे, दिस न्यू फोल्डर इज क्रिएटेड फॉर एवरी रेपो व्हेन यू क्लोन इट, associated folder is created, और इसमें आपका GitHub, मतलब बेसिकली दैट रेपो इज हियर फॉर यू टू यूज इट। सो अभी हम एक बार देख लेते हैं जिट इग्नोर में है क्या करके, ठीक है। ओपन वे, ठीक है। तो ये जो कवर करते हैं, लाइक दिस इज
काइंड ऑफ इनफ। अभी ये जो कर रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ, मतलब क्या बोलते हो, लाइक वंस यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद द बेसिक सेटअप, दिस दिस इज फाइन। अभी तो उन्होंने अपडेट कर दिया है। पहले मैंने जब ट्राई किया था, these things were not there, like छोटा सा फाइल आता था बस। बट now I think like they have a pretty good JIT now. So basically ये क्या करता है ना, like we don't want every thing from the Unity file to be uploaded to the repo. The libraries and temp file ये जो भी है ना, like and builds, like of course, like जब भी हम like once we start with the project, there will be lots of builds and all. So we'll be creating a folder called builds, एंड देन वहां पर हम सारे बिल्ड रखेंगे, ठीक है। ऑल दो विल बी इग्नोर्ड, वो रेपो में नहीं जाएगा, ठीक है। एल्स रेपो साइज विल ग्रो लाइक एनीथिंग। सो दैट्स व्हाई वी नीड git ignore to make sure all the unnecessary files are not pushed to the repository, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कि git ignore like is it good enough. I have a copy of that with me. Mhm. I guess it has covered pretty much everything, right? Yeah, and this is pretty good actually. The default one should be enough for you guys, okay? So we'll keep it like that, we'll not touch it, but like we'll go and download this attributes file, okay? Attributes basically क्या होता है ना कि like we are going for LSS and all, right? So basically large files. तो उसके लिए क्या होता है, like वो जो भी वो सेटिंग चाहिए होता है फॉर JIT, वो सारा चीज इसमें होता है, ठीक है। So that's why we need JIT attributes. So just copy and paste it over here. Okay. Yeah. So now the project folder, so basically the repo folder is ready in the local system as well. So अभी next step क्या होता है, to create a project and make the initial push, ठीक है। So अभी हमने ये किया है, so we'll just go ahead and check it out कि यहाँ पे हो क्या रहा है करके, okay. So here you So, can see यहाँ पर डेमो so, करके एक आ गया है, right? So you so, can add one more project by clicking plus, ठीक है। एक प्लस का क्लिक करके you can add one more repo that you want. तो अभी हम क्या जाएंगे, वी आर करेंटली इन द मेन ब्रांच। तो ये क्या होता है ना कि लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ये सारे रिपोजिटरी में देर आर मल्टीपल ब्रांचेस विद डिफरेंट मीनिंग टू दैट। मेन ब्रांच क्या होता है, this represents the release build। तो जो हम मेन ब्रांच में जाके अगर बिल्ड ट्रिगर करते हैं, तो that build should be pretty good, and it should be at a level where we can literally go and release the game or the product। तो वो मेन ब्रांच होता है। And there is one more branch called dev branch. So dev branch is not ready to be built and shipped, बट क्या होता है, लाइक डेव ब्रांच रिप्रेजेंट्स अ मोस्ट स्टेबल बिल्ड एंड द मोस्ट अपडेटेड बिल्ड। तो उसमें नए फीचर्स वगैरह ऐड किए रहते हैं। मेन इज नॉट द अपडेटेड, बट डेव ब्रांच जो होता है वो अपडेटेड है एंड स्टेबल है। बट स्टिल लाइक इट शुड गो थ्रू वन और टू राउंड्स ऑफ क्यूए बिफोर ऑल दैट चेंजेस आर पुश्ड टू मेन ब्रांच, ठीक है। सो मेन एंड डेव, उसके बाद में देर आर लाइक मल्टीपल ब्रांचेस विद द नेम ऑफ द बिल्ड और द स्प्रिंट, और कोई भी हम एक माइलस्टोन होता है ना, वो माइलस्टोन का नाम लेके एक सेपरेट ब्रांच होता है। सो दैट ब्रांच विल बी हैविंग ऑल द अपडेट्स फॉर दैट पर्टिकुलर मेन फीचर और दैट पर्टिकुलर माइलस्टोन, ओके। बहुत बोरिंग हो रहा है क्या? no, no, नहीं सर ठीक है। it's okay. चलेगा ना? Yeah. हम्म, So yeah, like there are multiple branches. Each branch have their own significance, ठीक है। So इतना याद रख लेना, मेन और डेव जो है ना, वो कभी छूना नहीं, ठीक है। For everything that you work, you guys are supposed to make a feature branch, ठीक है। Feature branch में you will work on the things that are assigned to you, ठीक है। Feature branch will be having name associated with that particular task that has been assigned to you। उस पे आप काम करोगे, जो भी लाइक क्रिएटिंग न्यू स्क्रिप्ट एंड ऑल और मॉडिफाइंग जो भी करना है करोगे, एंड यू विल कमिट इट एंड यू विल पुश द चेंजेस। उसके बाद में यू विल लेट अ गाय लाइक सीनियर जो भी होता है, यू विल लेट देम नो। सो यहाँ पर लाइक यू विल लेट मी नो कि तुमने तुम्हारा काम कर दिया है,
and you think that your branch is ready to be merged into the main feature branch. ठीक है? Then what I will do, I will go through all your changes. तो मैं चेक करूंगा एंड मैं आई विल रन द बिल्ड, आई मीन बेसिकली जो भी टेस्टिंग करना होता है मेरे साइड से मैं करूंगा. इफ आई फाइंड सम इशू मैं बोलूंगा आपको कि ऐसा ऐसा इशू आ रहा है, यू शुड वर्क ऑन दिस. So you guys will again work on that, make the modifications, make the changes, and again push your changes, and then again you let me know. So once we are done with this, and I am confident कि इसमें जो भी है issue ज़्यादा है नहीं करके, then what I will do is I will merge that feature, merge your feature into that particular feature branch or that particular milestone branch. ठीक है? So this is the process. ये उसके बाद में then that routine continues की that what is that uh, like a feature milestone branch को लेके there will be testing, that will be merged to dev, and then on dev there will be testing, and then it will be merged to main, and main से build लेके play store पे publish करेंगे. So this is the flow, like usually ऐसा ही चलता रहेगा. It's a cycle. ठीक. So yeah, this is the thing. अब यहाँ पे एक बार ऐसा देख लेते हैं कि लोकल चेंजेस है क्या करके. सो इट शोज कि एक नया फाइल ऐड हुआ है करके. सो देयर इज अ ग्रीन प्लस इंडिकेटिंग a new file has been added. अगर कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो देयर विल बी येलो, ठीक है, येलो कलर का आइकॉन होता है, एंड इट से दैट द पर्टिकुलर फाइल हैज बीन मॉडिफाइड. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट अ यूनिटी प्रोजेक्ट. ठीक है. एंड गाइस फॉर दिस वी विल बी यूजिंग यूनिटी 6. I have the confidence that Unity 6 is kind of stable as far as all the aspects of mobile development is concerned. और बोल रहे हैं यार इसमें कि विजुअल इंप्रूवमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे से काम करते हैं करके. सो वी विल टेस्ट इट आउट. ओके. आई एम आल्सो नॉट श्योर लाइक हाउ गुड इट इज, बट आई थिंक वी कैन श्योरली गिव इट अ गो. If things don't work out, we will surely fall back to a older LTS version. ठीक है. Like you guys have Unity 6 right now. Like आपने डाउनलोड किया है? Like how many of you have that Unity 6? I think I have it. I need to check. Okay. मैंने डाउनलोड किया है सर. Because I used to use LTS Okay. most of the time. Okay. So No, mobile I के लिए guess यार हम Unity लोग, 6 is also LTS. हाँ of course, like currently it's LTS अभी आ गया है. Like कल ही Yeah, रिलीज हुआ शायद, कल या परसों रिलीज हुआ शायद. 17 को परसों. हाँ. Then I don't have it now. Okay. So हाँ ओके. 3D कोर क्यों नहीं आ रहा पता नहीं यहाँ पे. अरे ये डाउनलोड हो गया. अच्छा यहाँ पे क्या. ओके. 3D कोर कहाँ है. अरे अरे डाउनलोड करना होता है क्या भाई. ओके. ये तो अपना इसमें क्या हो गया. Okay, so we'll just say it as a demo और लोकेशन हमारा रेपो वाला देंगे. ठीक है. ठीक है. एंड सेलेक्ट द फोल्डर. सेलेक्ट क्यों नहीं होगा. कनेक्ट टू, ये निकाल देता हूँ. ठीक है. विद दिस वी विल क्रिएट द प्रोजेक्ट एंड प्रे टू गॉड नथिंग ब्रेक्स. ठीक है. सब कुछ डाउनलोड करना पड़ा. तो इट वाज काइंड ऑफ अराउंड 12 GB It is पर. asking me for Windows, for Android, it is asking around something 3, and हाँ for that Windows build support, it is asking. हाँ. विंडोज बिल्ड सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी एज ऑफ नाउ, बिकॉज जो भी डिफॉल्ट जो आ रहा है दैट शुड बी इनफ फॉर. तो अभी हमने ये प्रोजेक्ट अभी कर लिया. अभी देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है नहीं हुआ. ठीक है.
Okay, thank God कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है. So you can see here ये सारे चीजें ऐड हुई हैं यहाँ, राइट? ये लाइब्रेरी क्यों इंक्लूड किया यार इसने? Library should be ignored. It won't. This is just showing your stage. The नहीं, बस library should be ignored क्योंकि यहाँ पे हमने बोला है ना ignore करके. no, it's ये unstaged right library now. I think after you commit it, when it gets staged, then after that it doesn't include it, like in GitHub. No, I don't think so. नहीं, ये तो आना ही नहीं चाहिए. नहीं यार, it took everything. See, इतना टाइम ले रहा है. तो अभी देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ. और ओ गॉड, माय बैड. ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ. लाइक दिस इज एक्सपेक्टेड. ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन व्हाट हैपेंड ओवर हियर. लेट मी जस्ट अरे कुछ टक्के हो गए. Because there are so many files in libraries and logs, once we stage it, this is kind of expected. Okay, and maybe it will crash now. Yeah. Mm, yeah, actually, this was my bad. Actually, like, we didn't have done this. Okay, अरे एक बार क्लोज कर लेते हैं. F4 कर दे भाई. Yeah. Okay, so the best thing for us to do is ये भी एक बार कर लेते हैं. Okay. So this project should not be created inside this repo folder. This thing should be inside this repo folder. Only then that ignore files will work. ये डेमो यहाँ से निकालना पड़ेगा. ठीक है. Yeah. Now when we go back to fork, कहाँ गए? So when we go back to fork in local change. ये तो अच्छा, ये तो स्टिच करना पड़ेगा. Maybe it will crash again, I don't know. ठीक है, चलो. Okay, so as you can see, so there are no library and log files. ठीक है. So this is the thing that we want in our क्या बोलते हैं, this repo, like this app should only catch these files, not all the log, library and all that. Also catch नहीं करना चाहिए. ठीक है. So with this we know that the ignore files are working and we will not be pushing all the unwanted things, क्योंकि library and log जो होता है it just क्या बोलते हैं, वो हमारे रेफरेंस के लिए होता है. ठीक है, लोकली होता है, not for others reference. So now what we will do is we will stage all this. Okay, so मैं एक बार ये चेक कर लेते हैं. Okay, over here. Where is that cheat? हाँ, यहाँ पे. ठीक है. So we can see here there are only basic
दो फाइल्स है यहाँ पे, ठीक है। दिस रीडमी जस्ट इग्नोर इट, हमारे लिए नहीं है। तो जस्ट जिट इग्नोर था यहाँ पर, ठीक है। सो नाउ वंस आई पुश इट फ्रॉम हियर, ठीक है। नाउ आई विल कमिट स्टूडियो। हाँ यार, ओके, दिस विल डू, ओके। ये थोड़ा पंगा है। ठीक है। नहीं, मीटिंग वाले दिन है। Okay, now it should work. Let's see. हाँ, ठीक है, अभी ये काम कर गई। ओके, so this you all should do, ठीक है, because like your name is kind of very important. Okay, just make sure that you don't give your nicknames like शिवू, अभी and all that. Okay, just give your proper name, जो भी आपके आधार कार्ड पे जो नाम है ना, वही नाम देना है यहाँ पे। With my project and also with like next project, जब भी आप कहीं भी जाते हो ना, just stick to your original name, जो भी आधार कार्ड पे आपका नाम है ना, just stick to that. Okay, it will help ease lot of pain, ठीक है। So once we are done, you can see the number over here 1। इसका मतलब ये है कि हमने एक कमिट किया है यहाँ पे, but that commit is not pushed, ठीक है। So what we will do is we'll just click on the branch and we will push main to origin, ठीक है। Just don't check any of these, okay, just keep it the way it is। अगर यहाँ पर कुछ करोगे तो बेकार में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। एंड पुश। ओके, नाउ वी डोंट हैव एनी नंबर ओवर हियर, इट सेज दैट जो सर्वर पे है और जो हमारे पास है वो दोनों ब्रांच एग्जैक्टली सेम है करके, ठीक है। सो विल चेक इट आउट ओवर हियर वंस कि यहाँ पर सब कुछ आया है कि नहीं आया, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर असेट्स पैकेजेस सब आ गया है। लाइक इनिशियली हमारे पास क्या था, जिट इग्नोर था और रीडमी था। सो नाउ यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स आर वर्किंग, ठीक है। सो ये होता है गिटहब सेटअप करना।